सो व्हाट इज अप गाइज, यू आर वॉचिंग SpurMeee और आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं एपिसोड 10 जो है डेथ नोट का। तो कल हम लोगों ने एपिसोड 9 देखा जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया था और हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो लाइट यागामी है वो अब यूनिवर्सिटी चला गया है, जो है टो यूनिवर्सिटी, और वहाँ पे एल भी आ गया है जो साथ में एंट्रेंस एग्जाम भी देने आया था। और भाई साहब उसी के साथ साथ उसका एडमिशन भी हो गया है। मतलब वो तो जो वो जानता हूँ मैं कॉलेज स्टूडेंट नहीं है, वो तो बस ऐसे ही इस केस की वजह से आया है और उसने अपना नाम भी चेंज करके एल की बजाय रियुगा हेडेकी कर दिया है। और अब देखने में मजा आएगी दोनों लोग कैसे एक दूसरे से बचेंगे, मतलब बचेगा तो केवल लाइट, लेकिन दोनों लड़ेंगे कैसे एक दूसरे से और किसकी आइडेंटिटी पहले रिवील होगी यहाँ पे। मतलब असली नाम तो हम लोग को ये एल का भी नहीं पता अभी। देखते हैं कि असली आइडेंटिटी कब रिवील होती है, दोनों में से किसकी पहले रिवील होगी। सो गाइस ज़्यादा देर नहीं करते हैं और रिएक्शन अपना स्टार्ट करते हैं इन 3, 2, 1। ओके एपिसोड 10 है डाउट है यहाँ पे। ओके यूनिवर्सिटी उनकी, और आज मेरे ख्याल से लाइट का भी और एल का भी दोनों का पहला दिन होगा इस नई यूनिवर्सिटी में, टो यूनिवर्सिटी में। ओके lawn tennis. I was surprised for you guys. Oh. I never thought you'd ask me to play tennis. It's been a while, but at one time I was actually the British junior champion. Oh. If I ask him if he's British, would he think I'm trying to find out more about him because I'm Kira? Oh well, can't hurt to try. Ryuga, were you raised in the UK? I lived in England for about 5 years when I was younger, but save your breath. Nothing in that story would reveal Elle's true identity, I promise you. Is that... ओहो 15 love. Wow, Ryuga, you sure don't mess around. He who strikes first wins. That L is incompetent. With all due respect, sir. The rest of the department runs away with their tails between their legs, and we're incompetent? Do you have any idea how many people are left at task force headquarters these days? 4-5 If you're लोग हैं concerned with public opinion, then you'll want to suppress the fact that... भाई। तुम लोग चीफ यागामी के चेहरे पे वो देख सकते हो, जो टेंशन और जो स्ट्रेस होता है वो चेहरे के फीचर्स में दिखाई दे रहा है। देखो यार, मतलब कितने प्रेशर के अंदर हैं ये लोग इस केस में, और वो भी इनके खुद के बेटे की वजह से। ओह पूरी भीड़ लग गई भाई, दोनों लोग इतना अच्छा खेल रहे हैं भाई। देखो पूरी भीड़ लग गई है कॉलेज स्टूडेंट्स की। ओ भाई साहब, Right. While it's true that Kira hates losing, it's also true that most people would rather win than lose. It's human nature. Is he going to think that I'm Kira if I go for the win? I suppose I could just lose on purpose, but if I do... यहाँ से जो कुछ भी लाइट करेगा हर चीज पे शक हो सकता है। ओ भाई साहब, अगर वो गेम में भी जीतने की इतनी कोशिश कर रहा है तो इस पे भी शक हो सकता है कहीं कीरा तो नहीं है, क्योंकि कीरा हेट्स टू लूज। It could work against me. Since he'd expect Kira to want to win, he might also expect me to throw the match to avoid suspicion. I don't see any way that he can profile me based on a tennis match. So, I have to assume he has some other goal in mind. Okay. I can see the wheels turning, Light Yagami. I'm already in your head. There's no way this tennis match will deepen our friendship. This is a token gesture, an elaborate act we'll go through so we can say we're closer. Because I wanted to play tennis with you, you'll assume that I'm preparing to take a step closer, laying the groundwork to know you better. And then you're going to try and trap me by getting me to say something that only Kira would know. However, I'm sure you'll tell me you need to know if you can trust me first. And of course, the only way to win your trust will be to share what I know about Kira. First thing you're going to want from me is... Name. Some kind of confirmation from a third party that you really are L. Which means... We'll have to go to task force headquarters. You humored me with the tennis match. The least I can do is answer some of your questions. But before this conversation goes any further, there's something I must tell you. What's that? I suspect that you, Light Yagami, are in fact Kira. Now, if you still want to ask me something, then please go ahead. You think I'm Kira? Well, when I say I suspect you, it's only a 1% possibility. That aside, I don't mind telling you that once I'm sure you aren't Kira, and I can verify that your deductive skills are as strong as I think they are, I'd like nothing more than to have you work with me on this investigation. Not to mention, we're so out of the way here, no one's gonna give you a hard time about the way you sit. I don't sit like this because भाई ऐसे क्यों बैठता है ये? I want to. I have to sit like this. क्यों? You see, if I were to sit normally, my deductive skills would immediately be reduced by roughly 40%. क्या? So,
All right then. ओके We can begin by taking a look at these. ओके Photographs of 3 notes written by prison inmates while under Kira's control. वही वाले नोट्स है, इसमें मैसेज था द गॉड ऑफ शिनिगामी, मतलब गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी लव्स एप्पल, वो वाला मैसेज था इन नोट्स के अंदर। भाई साहब Just prior to their deaths, none of this information has been made public. You can take as long as you want to look them over. Please let me know what you think. It would be quite amazing to learn that not only could Kira kill others, but could also control his victims' actions. I think Kira wrote these, and it seems he's encoded a message for you as well, almost as if he's mocking you. If you line these notes up side by side and take a look at the first letter of every line, it reveals a message. Rearranging it like this gives you L, do you know? Gods of death love apples. But there are obvious print numbers on the back of all these photographs. Arrange it in that order, we get L, do you know? Love apples, gods of death. That's incorrect. The thing is, there were actually 4 photographs. लाइट आराम से यार, लाइट भाई आराम से, लाइट आराम से, आराम से हर चीज करो भाई, तुम फंस सकते हो, लाइट आराम से प्लीज। L, do you know? Gods of death who love apples have red hands. ये तो उसने भेजा ही नहीं था, Fake. I never made any criminal write the letter in this. 4 साल तो उसने कभी भेजा ही नहीं था, कभी नहीं भेजा था। पहले बात, रेड हैंड्स होते भी नहीं है शिनिगामी के। Fourth picture? Is he stupid? Even though you knew the message was incomplete, you decided that there were only 3 notes. Never even considered. हाँ ये बात भी तो है, उससे कैसे पता है केवल 3 ही नोट्स हैं यहाँ पे। अरे यार भाई, That there might be a 4th. What do you make of that? Damn him. This wasn't just about gauging my deductive reasoning skills. He wanted to see what my reaction would be. If I keep falling for his tricks, I'll be playing right into his hands. सही बात है यार। I would probably try to get him to say something that was never made public in any way. Something that only Kira could know. Kind of like what you were doing just now. Truly amazing. What's incredible is that I've asked countless detectives that same question, and it took most of them minutes to even come up with an answer. But you immediately thought of a scenario in which Kira is speaking directly to the investigator. I'm impressed. You'll make a fine detective, Light. But it's a bit of a double-edged sword. The more impressive my answers, the more of a suspect I become. Yes, it's about 3% now. However, maybe... पहले 1% था, अब 3% हो गया शक उसको। ओ भाई साहब। You sure talk a lot, don't you, Light? Typical for someone who hates losing. I think that's 7%. 7%, अभी 3 से 5, अभी 1 से 5 हुआ था, अभी 7 हो गया भाई। Now, if I understand you correctly and I take you to task force headquarters, you'll help us with the investigation. Am I safe in making this assumption? Does this guy have a death wish? I don't understand. What's he thinking? Excuse me. लाइट डर गया था भाई, लाइट डर गया था। लाइट प्लीज़ स्मार्ट मत बनना, प्लीज़ तुम्हें केवल बचना है और तुम्हें केवल उसको घुमाना है, तुम्हें स्टाइल नहीं मारनी। प्लीज़ लाइट स्टाइल मत मारना, नहीं तो फंस जाओगे। जब वो टीवी पे भी वो वाला मैसेज रिले किया गया था कि 1500 ऑफिसर्स आ रहे हैं, उसको देख के लाइट ने कहा था कि इसमें कभी कीड़ा फंसेगा नहीं, ICPO बेवकूफ़ है। तो वो काइंड ऑफ मजाक तोड़ा रहा था, लेकिन इसकी वजह से एल को शक हो गया था। तो वही ये तुम स्टाइल मत मारो प्लीज़ लाइट, नहीं फंस सकते हो यार। तुम्हारा बस मेन काम है बचना और घुमाना उसको। क्या Light, it's your... क्या हो गया? My father. He had a heart attack. Have them call. मुझे नहीं पता तुम लोग क्या सोच रहे हो, या तुम लोगों ने तो देख ही रखा होगा, लेकिन मुझे अभी नहीं लग रहा कि यार ये कीरा ने किया है, मतलब लाइट ने। लाइट कर सकता है, मैं जानता हूँ लाइट की जो गॉड वाली फिलॉसफी है उसके लिए वो किसी को भी रास्ते से हटा सकता है, लेकिन पता नहीं यार मैं क्या सोचूं क्या ना सोचूं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि लाइट ने अभी ये किया होगा। क्या पता इतना प्रेशर पड़ रहा है इस इन्वेस्टिगेशन की वजह से, क्या पता असली में हार्ट अटैक आया हो, असली में।
So the doctors think stress was the only cause? हाँ देखो, मुझे लग रहा था कि वो, ये देखो उनके चेहरे पे स्ट्रेस दिखाई देता है देखो। और दूसरी बात मुझे लगा था ये स्ट्रेस की वजह से, जो तब प्रेशर पड़ रहा है इन्वेस्टिगेशन वाला, उसकी वजह से होगा। लाइट नहीं कर सकता, लाइट अभी इतनी जल्द, अगर बहुत ही कोई बड़ी सिचुएशन होती कि लाइट नहीं बच पा रहा है तब वो करता, समझ में भी आता। अभी तो बस स्टार्टिंग हुई है इन्वेस्टिगेशन की, अभी तो केवल ये सब स्टार्ट हुआ है केवल, तो अभी इतनी जल्दी लाइट नहीं करेगा, ये मुझे भी लग रहा था। Yeah. To be honest, I thought it was Kira when I first collapsed, but I'll be all right. It seems I've been pushing myself a bit too hard lately. Indeed. Ryuga, I'd like to help with the investigation. My father has erased any doubts I might have had regarding your true identity. Also, I'd like nothing more than to catch Kira so I can prove once and for all that I'm not him. I would find Kira and make sure he gets executed. I refuse to believe that my son could turn out to be Kira. This doesn't seem like an act to me. Or if it is, it's too cheesy. Ryuga, what would it take to get you to believe that I'm not Kira? Please, isn't there something? If you aren't Kira, it won't be necessary. Let things run their course and the truth will be revealed. I can't take this anymore. Put yourself in my position. How do you think it feels to be accused of being Kira? It was one of the worst feelings ever. What if you were to lock me up for a month in a place with no TV or any other kind of access to the outside world and keep a constant watch over me? Would any normal person be willing to go to such extreme measures to clear their name? Hideki Ryuga. Ryuzaki. L. He's the L I've been fighting this whole time. Ryuk. I never once felt cursed since I picked up the death note. In fact, the thought never even crossed my mind. I'm happier than I've ever been. All thanks to this power. Oh. I'm going to create a perfect world. उसकी philosophy God वाली। But normally humans who come into contact with a Shinigami have nothing but misfortune. Idiot! I don't pay you to complain. If they won't give you anything, then get creative! Okay. Mr. Demagawa, sir, this is for you. This is what I call a story. It's almost too good to be true. क्या है? Message to the world from Kira. Oh! Do not broadcast these tapes. I will kill your company's board of directors one by one. Who wouldn't air these? वो खुश भी है, वो साथ में चेहरा देखो उसका। ओह, सच में लाइट ने भेजा है ये? This is for real. Our ratings are gonna go through the roof. Holy crap! I'm so excited I feel like I'm having a heart attack here. तो गाइस यार, ये था हम लोग का एपिसोड 10 डेथ नोट का, और बहुत ही बढ़िया एपिसोड था। और स्टार्टिंग से हम लोगों ने देखा कैसे इन लोग का यूनिवर्सिटी में पहल दिन था, साथ में ryuga L का और साथ में लाइट यागामी का, और कैसे ryuga कोशिश करता है उसे दोस्ती करने की। उन लोग का जो टेनिस मैच था बहुत तगड़ा था। और साथ में उन्होंने ये भी देखा कि कैसे उसका जो शक है लाइट यागामी के ऊपर वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पहले 1 था, फिर 5 हुआ, और अब 7% हो गया है। तो यार आज का वीडियो था एपिसोड 10, काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को। और कल देखना है कि यार वो न्यूज़ क्या है जो आई है अभी अभी, जो कीरा ने भेजी है, कल न्यूज़ देखनी है मेरे को। और अब आगे कैसे इन्वेस्टिगेशन ये लोग साथ में कंटिन्यू करते हैं, कीरा और ryuga साथ में, तो मज़ा आएगी देख के। सो गाइस यार, आज की वीडियो में इतना ही। अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा लाइक करना मत भूलना, प्लीज़ लाइक कर दो उस वीडियो को, चाहो तो शेयर भी कर दो जाके एनिमे कम्युनिटी में, बहुत सारी मज़ा आ जाएगा मेरे को। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ऐसे ही मज़ेदार एनिमे रिएक्शंस डेथ नोट के, नारुतो, बोरुतो सबके आएंगे आगे चल के, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो यार आज की वीडियो में इतना ही, मैं तुम लोग से कल नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय।